Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, today we will disseminate the knowledge about the entitled theme, Benefits of Reciprocal Teaching. As we know that reciprocal teaching is basically the form of team teaching. It is that type of teaching in which students and teachers teach in a group. The teachers get affected or influenced by the behavior of students, and students also get influenced and affected by the behaviors of teachers. रेसिप्रोकल टीचिंग में हर एक स्टूडेंट को अपना रोल परफॉर्म करना पड़ता है. Especially in the reciprocal teaching, there are the 4 group members. I mean to say you 4 स्टूडेंट्स को 4 डिफरेंट रोल्स दिए जाते हैं. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, द स्ट्रेटजीज ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी कि 4 स्ट्रेटजीज इसमें हैं. फर्स्ट इज प्रोडक्टिंग, सेकंड इज क्लेरिफाइंग, थर्ड इज क्वेश्चनिंग, एंड लास्ट आई मीन टू से यू फोर्थ इज समराइजिंग. हर एक लर्नर को अपना अपना रोल निभाना पड़ता है. एक लर्नर जो है वो रेसिप्रोकल टीचिंग में एज ए प्रोडक्टर काम करता है. दूसरा लर्नर जो है वो एज ए क्लेरिफायर काम करता है. द थर्ड पर्सन has to also perform the role in the reciprocal teaching, the role of questioner. His or her job is to ask the question or questions related to the content or text. और जो चौथा लर्नर या हम ग्रुप मेंबर भी कह सकते हैं, उसका काम है to summarize, and the person is known as summarizer. Summarizer is that very person who will give the main ideas of the text or content. This is known as reciprocal teaching. Now, dear students, in today's lecture, we will focus on various benefits of reciprocal teaching. The major benefits of reciprocal teaching are highlighted as under. Number 1, develop communication skill. By allowing students to lead discussion within the group, reciprocal teaching helps them to develop their communication abilities. In addition to growing more comfortable with public speaking, the students learn how to choose their words carefully to ensure that others can understand them. This provides valuable first-hand experience to help them refine their communication abilities. Dear students, first benefit of reciprocal teaching is to develop the communication skill. यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग के जरिए हम कम्युनिकेशन स्किल्स लर्नर्स में डेवलप कर सकते हैं. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, रेसिप्रोकल टीचिंग एक ग्रुप टीचिंग होती है जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स मिलजुल के पढ़ाते हैं. दे यूज टू शेयर the ideas and thoughts related to the content, related to the text. चाहे टेक्स्ट प्रोज की सूरत में होगा, पोइट्री की सूरत में होगा, नॉवल की सूरत में होगा, कोई पैराग्राफ होगा या कोई पैसेज होगा. और हर एक पार्टिसिपेंट जो है वो कम्युनिकेट करता है रिलेटेड टू द कंटेंट एज पर द knowledge.
That is why the basic purpose of reciprocal teaching is to develop the communication skill among the learners. क्योंकि यहाँ पर हर कोई लर्नर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है रेसिप्रोकल टीचिंग में। यहाँ पर हर एक लर्नर को मौका मिलता है अपने आइडियाज को शेयर करना, टू कम्युनिकेट एंड एड्रेस द आइडियाज related to the text or content. That is why the basic purpose of reciprocal teaching is to develop the communication skill or ability among the learners. क्योंकि जब हर एक लर्नर अपने आइडियाज व्यूज शेयर करता है या सिंपली हम कह सकते हैं रीड करने का मौका मिलता है, so it helps among the learners to develop the communication ability. Dear students, communication skill learn करने के साथ साथ reciprocal teaching में stage phobia भी eliminate हो जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत से ऐसे learners हैं जिनके पास knowledge होती है लेकिन वो अपने knowledge को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। दे हैव प्रॉब्लम ऑफ स्टेज फोबिया, वो पब्लिक के सामने नहीं स्पीक कर पाते हैं। इसीलिए स्टेज फोबिया को एलिमिनेट करने के लिए वी हैव टू इनकॉर्पोरेट डिफरेंट रोल्स रिलेटेड टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो रेसिप्रोकल टीचिंग है ये 4 स्ट्रेटजीज पे डिपेंड है। फर्स्ट, प्रेडिक्टिंग, सेकंड, क्लेरिफाइंग, थर्ड, क्वेश्चनिंग एंड फोर्थ, समराइजिंग। तो जब हर एक लर्नर अपना अपना रोल निभाता है या परफॉर्म करता है, इट हेल्प्स टू द लर्नर वन टू अचीव द कम्युनिकेशन स्किल। I mean to say you, it helps the learner to develop the communication ability. And moreover, जो उसमें sense of insecurity होती है, shyness होती है, या वो stage phobia का शिकार है, तो वो stage phobia उसमें eliminate हो जाता है, while taking the role and accordingly performing the same role. Number 2. Students learn to ask questions. During a reciprocal teaching lesson, the students not only to learn how to ask challenging questions, but how to come up with a meaningful answers. Dear students, the second most important benefit of reciprocal teaching is it helps to develop the asking ability, questioning ability among the learners. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, टीम टीचिंग की फॉर्म में ग्रुप ऑफ लर्नर्स को पढ़ाना पड़ता है। हर एक लर्नर को अपनी टास्क परफॉर्म करनी होती है। रेसिप्रोकल टीचिंग में देयर इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी दैट इज नोन एज क्वेश्चनिंग, एंड the questioning is performed by one of the students or learners. इस टास्क को एक लर्नर को परफॉर्म करना पड़ता है क्योंकि रेसिप्रोकल टीचिंग में हर एक लर्नर को अपने टास्क के हिसाब से चलना पड़ता है। 4 स्टूडेंटों में से एक क्वेश्चनर भी होता है जिसका काम होता है टू आस्क द डीप क्वेश्चंस, मीनिंगफुल क्वेश्चंस related to the content, related to the text. जो भी टेक्स्ट है उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं वो एक क्वेश्चनर पूछता है। आस्किंग क्वेश्चंस का बेसिक पर्पस होता है टू गेट द मीनिंगफुल आंसर्स, ताकि मीनिंगफुल आंसर्स हासिल करके क्लियरेंस कंटेंट की हो जाएगी। नटशल में हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग helps the learners
हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो रेसिप्रोकल टीचिंग है ये रोटेशन मैनर में चेंज हो जाती है। एज वी नो दैट रेसिप्रोकल टीचिंग में जो लर्नर क्वेश्चनर काम करता है तो रोटेशन मैनर में दूसरी दफा उसे और कोई रोल परफॉर्म करना पड़ता है। इट मे बी क्लियरिफायर, यानी कि लर्नर को एज ए क्लियरिफायर काम करना पड़ेगा। तो रोटेशन मैनर में उसका रोल चेंज होता जाएगा, उसे समराइजर भी काम करना है। तो क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग स्किल डेवलप हो जाता है। एक लर्नर में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पैदा हो जाती है हाउ टू आस्क द मीनिंगफुल क्वेश्चंस। नंबर थर्ड, learn in groups. Reciprocal teaching puts students in the position to improve their reading comprehension through teamwork, so they are better suited to work by themselves on future projects. Dear students, as we have already discussed, reciprocal teaching ये वो टीचिंग है जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलजुल के पढ़ाते हैं, क्योंकि बुनियादी जो मकसद है, द बेसिक पर्पज ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग इज टू डेवलप द रीडिंग कंप्रहेंशन एमंग द लर्नर्स। इसीलिए कि जो लर्नर्स है वो लर्न करते हैं कि किस तरीके से ग्रुप में पढ़ाया जाता है। कीपिंग इन व्यू द डिस्कोर्स ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग, इसमें अक्सर 4 स्टूडेंट्स चुने जाते हैं और 4 स्टूडेंट्स को 4 डिफरेंट रोल्स दिए जाते हैं। एज नंबर ऑफ एंड टाइम एज वी डिस्कस्ड, एक स्टूडेंट जो है वो एज ए क्वेश्चनर काम करता है, दूसरा स्टूडेंट जो है वो एज ए प्रेडिक्टर काम करता है, तीसरा स्टूडेंट जो है वो एज ए समराइजर काम करता है, चौथा स्टूडेंट जो है वो एज ए क्लियरिफायर काम करता है। These are the 4 different roles which are performed by 4 different persons or students. तो इसीलिए हम कह सकते हैं इस टीचिंग में, आई मीन टू से यू रेसिप्रोकल टीचिंग में हर एक ग्रुप लर्नर को मौका मिलता है लर्न करने का, यानी कि जो हर कोई पार्टिसिपेंट वहां पर है वो एक दूसरे के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रेडिक्टर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है बाकी जो ग्रुप मेंबर्स है, लाइक क्वेश्चनर, क्लियरिफायर, बाय एंड लार्ज समराइजर। रेसिप्रोकल टीचिंग में हर कोई लर्नर जो है वो एक दूसरे के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होते हैं। नटशल में हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग से किस तरीके से हेल्प होती है ग्रुप ऑफ लर्नर्स को कि वो फ्यूचर में ग्रुप प्रोजेक्ट्स पे काम कर ले। नंबर 4, हेल्प्स टू क्लियर डाउट्स। रेसिप्रोकल टीचिंग हेल्प्स टू द स्टूडेंट्स टू क्लियरिफाई देयर डाउट्स व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट। द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू यूज ग्लोसरीज एंड डिक्शनरीज एटसेट्रा। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 4 स्ट्रेटजीज में एक स्ट्रेटजी क्लियरिफाइंग की है। द रोल ऑफ क्लियरिफाइंग इज परफॉर्म्ड बाय द पर्सन whom we called क्लियरिफायर। क्लियरिफायर का काम होता है रेसिप्रोकल टीचिंग में टू एलिमिनेट द डाउट्स, chaos and confusion. The doubts, difficulties, hindrances related to the content. Dear students, जो कंटेंट के रिलेटेड, टेक्स्ट के रिलेटेड डाउट्स है वो हम क्लियरिफाइंग स्ट्रेटजी में एलिमिनेट करते हैं। और किस तरीके से करते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल टीचिंग में देयर इज वन ऑफ द स्टूडेंट जिसे एज ए क्लियरिफायर काम करना पड़ता है और ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बताए कि डिफिकल्ट वर्ड की क्या मीनिंग है। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स एग्जिस्ट होते हैं कंटेंट में या टेक्स्ट में,
तो क्लैरिफायर की मदद से हम उन कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। वर्ड जो डिफिकल्ट है उनकी मीनिंग बता सकते हैं। वही मदद कर सकता है डिफिकल्ट वर्ड्स को इजी बनाना। दैट इज वाई क्लैरिफाइंग में या क्लैरिफायर जो है वो ग्लोसरीज का भी इस्तेमाल कर सकता है या ग्लोसरीज का मदद ले सकता है। अपार्ट फ्रॉम ग्लोसरीज जो क्लैरिफायर है वो डिक्शनरी भी यूज कर सकता है, ताकि जो भी वर्ड्स टेक्स्ट में है, आई मीन टू से यू डिफिकल्ट वर्ड जो है, कॉम्प्लेक्स कंटेंट जो है, उस कंटेंट को मीनिंगफुल बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए वो ग्लोसरीज और डिक्शनरीज का इस्तेमाल कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस reciprocal teaching is not only confined to know the meaning of difficult words. कभी कभार प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्लैरिफाइंग में हम प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम भी दूर कर सकते हैं। किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है वो हम इस स्टेप या स्ट्रेटजी में सीख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दैट इज वाई नटशेल में हम कह सकते हैं reciprocal teaching help us to clear the doubts among the students related to the content or text. Number 5th, help us to develop understanding. Reciprocal teaching helps students to develop understanding and comprehension about the text or content. We have already given the detailed account. The main purpose or basic purpose of reciprocal teaching is to develop the understanding and comprehension among the learners. जब स्टूडेंट्स मिलजुल के पढ़ाते हैं या टीचर्स और स्टूडेंट जॉइंटली पढ़ाते हैं, वो एक दूसरे के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो एक दूसरे के कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज जान पाते हैं, तो वो शेयर वहां पर नॉलेज करते हैं। देयर इज द ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफरेंस ऑफ द नॉलेज विच फाइनली रिजल्ट्स द अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन रिलेटेड टू द टेक्स्ट और रिलेटेड टू द कंटेंट। इसीलिए रेसिप्रोकल टीचिंग का मेन एंड फंडामेंटल पर्पस है टू डेवलप द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग among the learners. Number 6, promotes flexible thinking. Flexible thinking is the ability to think about things in a new or different way. A flexible thinker would be able to think of different solutions to the problem. It helps us deal with the uncertainty, solve problems, adjust to changes, and incorporate new information into our plans and ideas. Dear students, another important purpose of reciprocal teaching is it helps to develop or promote the flexible mode of thinking among the learners. Now, what is flexible mode of thinking? Dear students, flexible thinking is that type of thinking in which the individual thinks in different ways, different directions, in order to find the solution of the problem. वो अपने थॉट्स और आइडियाज को डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट डायमेंशन से डिस्क्राइब करते हैं, एंड वी कॉल द पर्सन दैट ही इज फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ आइडियाज एंड थिंकिंग. दैट इज वाई, डियर स्टूडेंट्स, creative persons possesses the flexible mode of thinking. Because creativity is something in which number of ideas are assembled in order to give new one. और जो वर्ल्ड की inventions and discoveries है, those inventions and discoveries are contributed by the creative persons. In case of reciprocal teaching, every participant comes with different solutions of the problem. How it is possible for the learner to come up with the different solutions of the problem, keeping in view the learner's flexible mode of thinking. जितनी की flexible mode of thinking
होगी उतने आइडियाज जनरेट और फ्लोट हो जाएंगे, और उसी तरीके से हम प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाई द बेसिक पर्पस ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग इज टू डेवलप द फ्लेक्सिबल थिंकिंग एमंग द लर्नर्स. हर एक लर्नर को फ्रीडम मिलता है अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाने का. नंबर 7, डेवलप ओपन माइंडनेस. Open mindedness is a character of a mature and curious person who tries to understand things beyond his belief system. An open-minded person is curious. Dear students, open-minded person is that person जो अपने belief system से हट के सोचता है. वो person जो है वो open-minded person कहलाया जाता है. The basic purpose of reciprocal teaching is to develop the open-mindedness among the learners. In case of reciprocal teaching, अगर participant, I mean to say you learner को ये महसूस होता है मैं सही तरीके से रोल को नहीं निभाता हूँ, being as an open-minded person, वो एक्सेप्ट इस चीज को करता है, there is a scope for the criticism. क्योंकि जो open-minded persons होते हैं वो ऑलवेज वेलकम करते हैं क्रिटिसिज्म, चाहे वो दूसरों के लिए क्रिटिसिज्म करेंगे या अपने लिए वो क्रिटिसिज्म करेंगे. वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म को ऑलवेज एक्सेप्ट करते हैं. वो अपने बिलीफ सिस्टम से हटके सोचते हैं कौन सी खामियां हम में हैं, कहां हमने सही किया और कहां हमने गलत किया है. तो नटशल में हम कह सकते हैं जो रेसिप्रोकल टीचिंग है, इट हेल्प अस टू डेवलप द ओपन माइंडनेस among the learners or students. Number 8, foster active involvement. Active learning refers to a broad range of teaching strategies which engage students as active participants in their learning during class time with their instructor. As their students, we are already well acquainted. जो reciprocal teaching है, every learner is active participant. क्योंकि रेसिप्रोकल टीचिंग तब तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक कि हर एक लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा. दिस इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ, आई मीन टू से यू, रेसिप्रोकल टीचिंग, या हम दूसरे मायने में कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म का. क्योंकि जो रेसिप्रोकल टीचिंग है ये विगोस्की के सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से लिया गया है. डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रेसिप्रोकल टीचिंग है क्या ये विगोस्की के सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से लिया गया है या जीन पियाजे के कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म से लिया गया है. द एप्रोप्रिएट आंसर इज विगोस्की's social constructivism. Now keeping in view the active participation, जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा है जो रेसिप्रोकल टीचिंग है इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन टू द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी लर्नर. जैसे कि 4 लर्नर्स ग्रुप में होते हैं और उन 4 लर्नर्स को एक्टिवली 4 डिफरेंट रोल्स करने पड़ते हैं. दे हैव टू परफॉर्म द 4 डिफरेंट टास्क्स, लाइक टू वर्क एज एन प्रेडिक्टर, टू वर्क एज एन क्वेश्चनर, to work as an summarizer, to work as an clarifier. These are the 4 different roles which every learner has actively performed. That is why reciprocal teaching fosters the active involvement. Otherwise, अगर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो एक लर्नर जो है या ग्रुप ऑफ लर्नर्स जो है वो टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. नटशल में हम कह सकते हैं विदाउट द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रेसिप्रोकल टीचिंग इज नॉट पॉसिबल. इन ऑर्डर टू परफॉर्म द टास्क ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, किस तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, इट इज होली एंड सोली बेस्ड ऑन द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द students or participants. Number 9,
promote collaborative learning. Collaborative learning approach involves people is working together on activities, learning tasks in a group small enough to ensure that everyone participates. As dear students, we are already acquainted about collaborative learning is that type of learning in which group of learners work jointly on single task. यानी कि कोऑपरेटिव मैनर में, कोलैबोरेटिव वे में डिफरेंट लर्नर जो है वो एक टास्क पे काम करते हैं. सेम इज द केस इन केस ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग. स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो है वो जॉइंटली एक टास्क पे काम करते हैं. जैसे कि हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल दी है कि रेसिप्रोकल टीचिंग में 4 पर्सन्स होते हैं. हर कोई लर्नर जो है या पार्टिसिपेंट जो है वो एक दूसरे के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होता है. और जो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स होता है ये अपना अपना रोल परफॉर्म कर पाते हैं. इन्हें अपना अपना रोल परफॉर्म करना पड़ता है. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन न्यूमरस टाइम्स, देयर आर द 4 roles which are assigned to 4 different students. Role of predictor, role of clarifier, role of questioner and role of summarizer. ये 4 roles परफॉर्म किए जाते हैं इन एन कोलैबोरेटिव फॉर्म. दैट इज वाई रेसिप्रोकल टीचिंग प्रमोट्स द कोलैबोरेटिव लर्निंग. नटशल में हम कह सकते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है ये डेवलप हो जाती है reciprocal teachings, because collaborative learning is that learning in which small group of participants or learners work together before concluding. Tomorrow we will deliver the lecture related to the another important unit which is entitled as growth and development. Dear students, if you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.